नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा वीडियो में। और हम सभी जानते हैं कि इन दिनों इसराइल और हमास इसका जो युद्ध चल रहा है आपस में, गाजा पट्टी पर और इसराइल के अन्य बॉर्डर्स पर भी, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ युद्ध चल रहा है। तो कुल मिलाकर इसराइल और जो फिलिस्तीन का मुद्दा है वो खबरों में है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है कि जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट्स हैं, जो खालिस्तानी हैं, सपोर्टर्स हैं, वो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। जो हमास ने इतना बड़ा वहां पर वारदात को अंजाम दिया। इट किल्ड लॉट ऑफ पीपल, इट नो beheaded babies, it burnt live babies, and no parents were killed in front of children were burnt down in front of parents, women were raped, maimed. So all these things are we have read about that, we have seen the video clips and on social media, on mainstream media also. But this is an interesting connection, and this is a worrisome connection for India, which is emerging between the Khalistanis and the Hamas, or the Khalistanis and the Islamic terrorists. So we'll talk about that. तो आज हमारे साथ एनसी बिपिंद्र जी हैं। बिपिंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थैंक यू आनंद जी। जी, बिपिंद्र जी के विषय में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ। बिपिंद्र जी लगभग फॉर मोर देन 2 decades ही हैज बीन अ डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट. He has worked in leading agencies like Bloomberg covering defense and national security. इसके अलावा लॉ एंड सोसाइटी अलायंस, इस लॉ एंड सोसाइटी अलायंस के एक थिंक टैंक है जो दिल्ली में सेटअप किया गया है। लॉ एंड सोसाइटी अलायंस के फाउंडर डायरेक्टर भी हैं, और खासकर चीन, पाकिस्तान, इस्लामिक टेररिज्म, जिहाद, इन सब पर उनका बहुत काम है। कई अंतरराष्ट्रीय पब्लिकेशंस में भी लिखते हैं और राष्ट्रीय पब्लिकेशंस में भी लिखते हैं। तो विपिंदर जी, आपका स्वागत है। मैं चर्चा शुरू करने से पहले मैं दर्शकों के साथ एक 2-3 स्लाइड्स शेयर करूंगा, जिससे कि आपको अंदाजा लगेगा कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। तो ये, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें अगर आप जो है वो चौथा पॉइंट अगर आप देखेंगे, दैट इट इज वर्थ नोटिंग दैट सेवरल एक्स अकाउंट्स हैव इमर्ज्ड expressing support for both Khalistan and Palestine, suggesting a convergence of interests between Khalistani and radical Muslim communities. These accounts are suspected to be funded by anti-India entities. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो है स्क्रीन पे चौथा पॉइंट जो है। इसके अलावा अब आप देखिए कि ये चेहरा आप देखिए, ठीक है ना, ये चेहरा आप देखिए जो आप कर्सर से देख सकते हैं जो है। और इधर ये जो तीनों चेहरे हैं वो आप देखिए। तो ये दो चेहरे आप देख सकते हैं, ठीक है ना, और एक चेहरा ये देख सकते हैं, और इधर ये तीनों चेहरे देखिए। ये 6 फॉर पैलेस्टाइन और इधर ये खालिस्तानी, ये तीनों लोग सेम है जो है। तो ये हमारी रिसर्च टीम ने इसके विषय में जो है, तो आप एक कनेक्शन देख सकते हैं कि क्या है। नेक्स्ट देखते हैं कि अब आप देखिए कि on October 7, 2023, after gruesome attack by Hamas terrorist organization against Israeli civilians, few Sikhs in Canada and London rallied in support of Palestine using the tag 6 for Palestine. Couple of individuals were identified to be present earlier in Khalistani rallies also. और ये देखिए, ये जो आप सोशल मीडिया अकाउंट्स देख रहे हैं, ये कॉमन है जो है, और लिंकिंग पास्ट मैसेजेस बाय दीज कॉमन प्रोफाइल्स, जैसे आप देख सकते हैं वसीम हुसैन लतैफी हैं, ये एक और अकाउंट है ए बी करके, ये गब्बर करके अकाउंट है, दिस इज अनदर अकाउंट। और ये आई स्टैंड विद पैलेस्टाइन, इंडियन मुस्लिम्स अंडर अटैक, इंडिया, ये पूरा कनेक्शन जो है आप इस स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। ये जो आप सोशल मीडिया अकाउंट देख रहे हैं, ग्लोबल सिख अवेयरनेस एंड राइट्स नेटवर्क, ये मैंने आपको बताया, पंच, आप। सो दीज अकाउंट्स, दे ये पहले टारगेट करते थे हैशटैग इंडियन मुस्लिम्स अंडर अटैक। तो ये खालिस्तानी पैलेस्टाइन के मुद्दे को लेकर खालिस्तानियों का एक पूरा सपोर्ट बेस काम कर रहा है हमास के लिए। तो अगली स्लाइड देखते हैं।
ट्वीट्स बाय लीडिंग प्रोफाइल्स इन सपोर्ट ऑफ खालिस्तानीज एंड पैलेस्टाइन्स। तो ये देखिए आप जरा, जैसे ये एक ट्वीट है पंजाब की तरफ से, ये अमर नाम का एक जो है ट्विटर हैंडल है। एज ए सिख आई प्रे फॉर द इनोसेंट्स ऑन बोथ साइड्स बट एट द सेम टाइम आई विल से लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशनरीज। ये जिन रेवोल्यूशनरीज की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने औरतों और बच्चों को बेरहमी से मारा। इनको ये रेवोल्यूशनरीज कहते हैं, फ्री पैलेस्टाइन। तो ये आप देख सकते हैं एस, जैसे ये अकाउंट जो है अगर आप देखेंगे, एक तो ये गब्बर पे सिक्स और पैलेस्टाइन, ये आप देख सकते हैं। एक और ट्वीट पढ़ते हैं, ये जो अकाउंट है जहां कर्सर, एज सिक वी वर taught to extend our hands to those who need it and to raise our voice for those who are silenced until Palestine is free. I will speak up for my Palestinian sisters and brothers. इधर एक इसके नीचे है जो है LAVS everybody. If you are a Sikh for Khalistan, I don't think you can be neutral on the Israel or Palestine conflict. मजे की बात ये कि ग्लोबल सिख अवेयरनेस एंड राइट्स नेटवर्क, सिख नेशन सपोर्ट्स कॉज ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर पैलेस्टाइन। तो ये आप देख सकते हैं। इसमें मजे की बात यह है कि, मजे की भी नहीं, मैं कहूंगा दुख की बात यह है, और बड़े जिनसे कि ये एक्सपोज होते हैं खालिस्तानी जो है टेररिस्ट सेपरेटिस्ट, कि इन्होंने एक भी बार कंडेम नहीं किया, आलोचना नहीं की, निंदा नहीं की हमास ने जिस तरीके से मासूम लोगों को मारा। एक स्लाइड और देख लेते हैं और फिर चर्चा पर चलेंगे। पास्ट ट्वीट्स इन सपोर्ट ऑफ खालिस्तान बाय कॉमन लीडिंग प्रोफाइल्स, ये एक और हमारी टीम ने रिसर्च की है। तो इन प्रोफाइल्स को अगर आप देखेंगे, कनाडा खालिस्तान रेफरेंडम सरे, तो profiles advocating Sikh for Palestine have previously shown support for Khalistani propaganda, indicating a potential alignment of interest between Khalistani and radical Muslim communities. और ये कॉमन पाकिस्तानी, अब इनके बीच में कनेक्शन देखिए आप, ये कॉमन पाकिस्तानी प्रोफाइल्स हैं प्रोपोगेटिंग खालिस्तान एंड हमास टेररिज्म। यानी कि पाकिस्तान के ये प्रोफाइल्स हैं सोशल मीडिया के, ये चल सब कुछ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से रहा है। तो ये देखिए मन्नो खान जो हैं, ये मन्नो खान का मुजम्मिल खान, वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन, वी वांट जस्टिस फॉर निज्जर, वी स्टैंड विद सिख, वी स्टैंड विद माइनॉरिटीज इन इंडिया। यानी ये कॉमन कनेक्शन पाकिस्तान के। ये एम अजहर सिद्दीक साहब हैं, और ये भी जो है खालिस्तानियों को भी सपोर्ट करते हैं, और ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। तो बहरहाल जो है ये हम चर्चा अब शुरू करेंगे इसके ऊपर। तो हमारे दर्शकों ने देख लिया कि ये कनेक्शन इमर्ज हो रहा है। युपिंदर जी, आपका क्या कहना है इस बारे अरुणानंद जी, ये ना जो आपने स्लाइड्स बनाया बहुत अच्छा बनाया है। इट क्लियरली शोज द काइंड ऑफ कनेक्शन दैट दे हैव, द नेटवर्क उनका जो है वो क्लियरली पता चल रहा है। बट व्हाट आई वुड से इज दिस इज नथिंग न्यू। व्हाई आई से दिस इज नथिंग न्यू इज दैट हिस्टोरिकली स्पीकिंग, एटलीस्ट इन द लास्ट 2 decades, वो एक क्लोज कनेक्शन रहा है पाकिस्तान और खालिस्तानी मूवमेंट का। तो व्हेन यू से पाकिस्तानी कनेक्शन, इसका मतलब है एक इस्लामिक एजेंडा तो है ही है उनका। तो ये इस्लामिक एजेंडा होने के कारण ये खालिस्तानी ग्रुप्स को जो सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट और मॉरल सपोर्ट, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट बाहर देशों में, वो डिपेंडेंट हो गए हैं पाकिस्तान के ऊपर। उसके वजह से उनको इस्लामिक एजेंडा को, they have to propagate that agenda. There is no other go. Unless you do that, your support system will collapse. तो ये उनका मजबूरी है एक्चुअली, खालिस्तानी लोगों का। मैं बोलूंगा मजबूरी इन द सेंस दे आर नो में? इट्स ए चॉइस ऑफ इनकेपेबल ऑफ स्लेवरी। टेकिंग केयर ऑफ। इट्स हाँ ए जी। चॉइस ऑफ स्लेवरी। हाँ, इट्स बेसिकली अ फॉर्म ऑफ स्लेवरी। उनको स्लेवरी माइंडसेट है अभी, वो कंटिन्यू रहेगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ये पाकिस्तानी कनेक्शन जो है, इट इज नथिंग न्यू। खालिस्तान हैज बीन अ एजेंडा ऑफ पाकिस्तान, इसमें डाउट नहीं है। इट इज अ मूवमेंट दैट वाज क्रिएटेड एंड फ्यूल्ड पोस्ट इंडिपेंडेंस बाय पाकिस्तान, इसमें डाउट नहीं। पर्टिकुलरली आफ्टर द 1971 वॉर, जब बांग्लादेश का जो लिबरेशन हुआ था, उसके बाद उनका जो रिवेंज फीलिंग जो है पाकिस्तान का, वो बहुत बढ़ गया है। वो बढ़ने के कारण वो कश्मीर में कुछ कोशिश करते हैं, कोई पंजाब में कोशिश करते हैं अभी। सो नाउ दे आर ट्राइंग टू डू इट इन केरला एंड अदर प्लेसेस आल्सो, तमिलनाडु आल्सो। तो ये कोशिश करते हैं उनको जैसे भी वो बांग्लादेशी लिबरेशन का रिवेंज लेना है।
तो ये कोशिश करते रहते हैं, और उसके वजह से ये जो मूवमेंट्स हैं ये सारे, पर्टिकुलरली जो इस्लामिक मूवमेंट, खालिस्तानी मूवमेंट है, वो इस्लामिक एजेंडा का स्लेव बन गया है। दैट इज द अल्टीमेट आउटकम। वो पालस्तीन में जो प्रॉब्लम हो इसराइल के बीच के साथ, या कोई और जगह पे हो, वो इस्लामिक एजेंडा को वो डेफिनेटली वो फॉलो करेंगे उसमें। दे हैव नो अदर गो। वो अनलेस दे डू दैट, their support system will collapse. Pakistan will withdraw its hands, and this entire जो बोगी ऑफ खालिस्तान दैट इज हैपनिंग ग्लोबली, पंजाब में तो उनका सपोर्ट बिल्कुल जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है। तो बाहर देशों में ही चल रहा है, यूके में चल रहा है, यूएस में चल रहा है, कनाडा में चल रहा है, ये सारा कोलैप्स हो जाएगा। सो दैट इज देयर मजबूरी, दैट इज देयर स्लेवरी माइंडसेट। But what are its implications for the India's national security? अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो हमारे लिए क्या implications है और हमें किन फ्रंट्स पे कॉशियस होने की जरूरत है, खासकर अगर कोई ऐसे भारत में क्षेत्र हैं जैसे पंजाब का है मान लीजिए, या कोई बहुत सारे कुछ ऐसे हैं जो जहाँ पे मुस्लिम्स की एक बड़ी रेडिकल मुस्लिम्स की एक बड़ी तादाद है। मैं यहाँ पे एक बात स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि सारे मुस्लिम्स को एक कैटेगरी में नहीं डालना चाहिए। आई थिंक दिस इज व्हाट रेडिकल मुस्लिम्स वांट आल्सो, that we put all the Muslims in one bracket and this thing. So हम इस डिस्कोर्स को, मैं अपने दर्शकों से भी ये कहना चाहूंगा कि हम जब भी इस इस्लामिक जिहाद या इस्लामिक टेररिज्म के डिस्कोर्स को करें तो वी शुड डिफरेंशिएट बिटवीन मुस्लिम्स एंड रेडिकल मुस्लिम्स। सो लेकिन भारत की सिक्योरिटी के लिए इसके क्या इम्प्लीकेशंस एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस व्हिच वी नीड टू टेक? राइट, अभी फ्रॉम द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव आप देखेंगे तो देर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। वन इज डोमेस्टिक एंड द अदर इज इंटरनेशनल। सो लेट अस एनालाइज बोथ दीज थिंग्स। वन इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप देखेंगे तो ये जो तालमेल है, दिस radicalized इस्लामिक ग्रुप्स ग्लोबली एंड स्पेसिफिकली खालिस्तान मूवमेंट या जो भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स इंडिया में चल रहे हैं, इनका जो तालमेल है, इट कुड cause a deep domestic strife in some way or the other. Particularly since we are discussing about this Khalistan Islamic nexus, radical Islam nexus. So particularly in Punjab, you will find, since it is also a border state, which everybody knows. I mean, I'm just reiterating that fact. So there is a बॉर्डर भी huge पाकिस्तान के साथ है, सबसे हाँ, बड़ी बात। पाकिस्तान के साथ जो जी। है, तो बॉर्डर जो है, उसके वजह से व्हाट कुड हैपन इज दैट देयर मे बी सम काइंड ऑफ अ पुश फॉर creating a Kashmir sort of a violent situation within Punjab. So we have been effective in dealing with it. Essentially, we have done it using Sikh police officers, Sikh army military officers. Uh, you know, that is what has been the work of India. We have always dealt with the Khalistan movement through Sikh officers, whether it is General Brar or whether it is Gill, or you name all IPS officer. So we have dealt with it by their own, by nationalist elements in that community. So we have always separated the nationalist Sikhs, which is actually 98 to 99% are nationalist Sikhs. Only 1% are Khalistani extremist groups. And that is a fact not just in India and Punjab, it is a fact even in the global diaspora. So आप यूके में देख लीजिए, आप कनाडा में देख लीजिए, यूएस में देख लीजिए, negligible number is the Khalistani, but the problem is they are so vociferous that the 98 99% nationalist Sikhs are silenced by this vociferous 1%. So that is where the problem lies. In fact, I want to recall one Bloom review report which came out just recently in 2023, only some 3-4 months back. It's a religious extremism research done by a UK independent researcher, and he comes out with this kind of reports very frequently, and his name is Colin Bloom. So it's called as the Bloom Review. He mentions that there are almost 500,000 Sikhs in UK,
Out of the 500,000 Sikhs, there are about 250 Gurudwaras in UK which cater to the religious needs of this group. So what has happened in almost 75 to 80% of these 250 Gurudwaras, it is the 1% Khalistani extremists who have captured the control over these Gurudwaras. So the funding that happens to these Gurudwaras, they use that money for uh, fostering their Khalistani agenda. So this kind of a thing, I mean, this 1% being vociferous, they become much more, what do you call it, as much more powerful in the diaspora sector. So what could result out of it is what has happened with Canada in the recent times over the Nijar, the murder that has happened. They will perforce, push the hands of political parties in those countries to take a pro-Khalistani stand, like what has happened in Canada. So similar situation is emerging in UK also. And if you see, even these Khalistani movements, there is a support, big support from the radicalized Islamic groups. So I'll give you an example of what is happening in the US. The Indian American Muslim Council, which is again, if you look at them, there are no Indians at all in it. There are only Pakistani Muslims in that group. But they call themselves as Indian, Muslim Council, American Muslim Council, and they completely support the Khalistani elements in the US. So when I say two elements, I told you about the domestic element. This is the external international element in abroad, the security element abroad. So they will ensure that your diplomatic ties with nations collapse. They will try to project you, they propagate a impression that India is a rogue state. This kind of a propaganda handiwork will happen. They will try to, what do you call it, as do some influence operations to show India as a very radical Hindu state. So if you already know that in the media abroad, they call it as a Hindu nationalist government. Okay, it's actually they use it as a pejorative. They don't use it to. Will they call, say, the American President Joe Biden as a Christian nationalist state because he always takes oath in the name of Jesus Christ? Okay, so will they call him that? No, they won't. But in India, they are easily calling it as a Hindu nationalist state. So this kind of a propagation will happen. So this is. I wanted to ask you, Inter- Indraji, one particular thing that do you think we have seen in the earlier slides that there is the Palestine the support by Khalistani separatists for Hamas and do you think that this is just basically a token support, or do you think that we are looking at a possibility, or has it already happened that on ground level also there is a coordination between the two in terms of probably arms training or training in to carry out subversive activities? So do you see a possibility of that, or has it already happened? Because you are very well entrenched in the In in fact, terms of. it's a very, very good question. In fact, I was about to come to that aspect when I was answering your previous question. See, this coordination is not, the support to Palestine is not a token support. Let us be very clear about it. There is a deep, deep nexus that is, it's an entrenched nexus that has already been established. Let me give you another example of this. There was a report in 2021 from the Hudson Institute, which is an American think tank, and it's headed by Hussein Haqqani, who is again a Pakistani. He was previously the Pakistani ambassador to the US, and he had a fallout with the then government, Pakistan government, and he was removed from the post, and now he is a persona non grata in Pakistan because he highlighted the Pakistan's the nebulous links with terror groups and all that. So he was made a persona non grata. So it's headed by him. So just to give you the background of Hudson Institute, they came out with a report. It's called as the Pakistan's Destabilization Playbook, Khalistan Separatist Movement in the US. This is the report. They basically brought out the kind of nexus, the deep nexus that Islamist groups, the radicalized Islamist groups
funded by Pakistan, as with the Sikh separatist elements, how they are being funded, how they are being trained, how they're, for example, this, Gurpatwant Singh Pannun's group, Six for Justice, its website was being run from Karachi. So the registration was done in Karachi. Is the referendum website was also registered in Karachi and was run by from Pakistan by ISI elements. So what I mean to say is that there is a deep nexus that has been established, and this is not a token support. And of course, if you look at this Nijar or the other Khalistani leaders in Canada and other things, they have been given proper weapons training. The videos have come out where the Nijar, he himself is carrying a rifle, and then he is participating and he himself has been training people in weapon usage. So when I talked about the security aspect last time, I was also pointing out to the recent threats that have been posed to the Indian diplomats in these countries. Now, Canada, they have been putting posters calling for, calling the Indian High Commissioner and the diplomats as murderers of Nijar, and they are targeting him. Kill India is one big campaign that they are doing. Mind you, now this same trend has started in UK also. Now, Vikram Doraiswamy, our High Commissioner in UK, he has been facing threats. His posters have been put up saying that, he is one of those Indian agents and need to be taken care of, something like that. So, of course, there was one recent incident when he went to on an invitation from a Gurudwara in UK. He was confronted by two Khalistani elements, and he was forced to return without attending the event that he was invited for. So, what are the security threats to Indian diplomats, Indian nationals in abroad is also increasing because of this. And of course, in nations like Canada, in the name of freedom of expression, they have given voice to these murderers and people who are issuing threat to murder. Actually, I don't know how it is not a crime to issue a murder threat to anybody in Canada. How does it uh, become freedom of expression? That is actually something that I cannot comprehend. This is a crime anywhere in the world. Issuing a life threat to anybody is a crime anywhere in the world. How is it freedom of expression? So these kind of security elements do come up both domestically and internationally because of this nexus that has happened. So before we come to the last question, I just want to share with my viewers one interesting fact that it's very ironical. ये बड़ा विडंबनापूर्ण है कि ये जो इस्लामिस्ट के साथ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट अपना एक नेक्सस बना रहे हैं, और वो इसलिए बिकॉज खालसा पंथ की जो स्थापना है, सिखों को जो खालसा पंथ जो है, खालसा मतलब प्योर, उसकी स्थापना ही इस्लामिस्ट को काउंटर करने के लिए हुई थी। और तो ये बड़ा आयरॉनिकल है, उनके सिखों के जो है ऐसे गुरु रहे हैं जिनको की इस्लामिस्ट बादशाहों ने हिंदुस्तान में जो जबरदस्ती राज कर रहे थे उनको मौत के घाट उतारा, उनके बच्चों को मौत के घाट उतारा। और आज खालिस्तान की आड़ में कुछ स्वार्थी तत्व ऐसा लगता है कि उनके साथ एक नेक्सस करे। तो ये तो एक बड़ा ही अनहोली नेक्सस है, और ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नेक्सस है कि सिख जो है वो सपोर्ट करें, सिख सेपरेटिस्ट जो है वो, या सिखों का एक वर्ग जो है सिख सेपरेटिस्ट के नाम पे जो है, जैसा विपिन जी ने कहा कि मुश्किल से 1% भी नहीं है, लेकिन वो सपोर्ट कर रहा है हमास को और इस्लामिस्ट को। तो ये भी एक, और भारत में भी जब फार्म लॉ को लेकर एजिटेशन हुआ था, जो कृषि संबंधी कानून है, तो उस समय भी एक सीए को लेकर, तो एक पिछले काफी समय से भारत के अंदर भी, और जो हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नजर आ रहा है कि सेपरेटिस्ट, जो सिख सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, उनका एक नेक्सस क्रिएट किया जा रहा है विद द इस्लामिक रेडिकलिस्ट्स और इस्लामिस्ट्स, भारत के अंदर भी, भारत के बाहर भी। और विपिन जी ने जैसा कहा कि पाकिस्तान का तो एक उसमें जो केंद्रीय रोल है ही। विपिन जी, अंतिम सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि डू यू सी एनी चाइना एंगल इन दिस ऑल्सो, दिस ये जो नेक्सस इमर्ज हो रहा है हमास और ये सिख सेपरेटिस्ट का,
या इस्लामिस्ट और सिख सेपरेटिस्ट का। तो इसमें चाइना का कोई एंगल जो है आपको नजर आता है क्या? Yeah, obviously there is a China angle to this entire episode. Uh, One thing is very clear that China sees India as a big threat to its rise in the global stage. So, and obviously it wants to create problems for India anywhere and everywhere. So recently, I think you also dealt with it in some other event where inconvenient truths करके वो Chinese national चलाते हैं ये एक thing. And also in Canada there have been some Chinese nationals who are now not in consonance with the communist China's policies. They are free thinking Chinese, so they have come out and said that Nijar killing could be the handiwork of Chinese to ensure that there is a confusion and problem between India and the Five Eyes nations, the all तो the हमारे democratic दर्शकों के लिए nations. आप बता दें ये फाइव आइज नेशंस कौन से हैं? Five Eyes nations are US and its allies like US, Canada, uh, न्यूजीलैंड। Australia, New Zealand, and UK. So these are the five और Eyes ये इनको nations. फाइव आइज शायद इसलिए कहा जाता है You, कि दे शेयर द they, इंटेलिजेंस। yeah, basically they share intelligence. They are the five eyes which look at intelligence gathering globally and share intelligence among the five nations. So this is called as the five eyes. So China wanted to create a confusion and a problem, diplomatic problem between India and these five eye nations. So they hired some local uh, goons who killed Nijar, and then the blame was put on India, and India got caught in the machismo thing about how Raw is doing a Mossad everywhere in the world. एक्चुअली इंडियन See, एस्टेब्लिशमेंट ने तो नहीं किया, पर मैं वही कह रहा था। इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया, ना इंडियन लेकिन ये मीडिया जो ने किया. यूट्यूब इंडियन पे मीडिया, इंडियन पीपल. इन्फ्लुएंसर्स और जो है जो एकदम कुछ शौर्य और पराक्रम की भाषा बोलने वाले जो वो है Yeah, कि, I mean, और see, टेलीविजन basically, चैनल्स ने खासकर, मैं ये correct, काफी correct, सारे उसको वो देखा correct. कि उनको एक बड़ा जो है वो लग रहा था कि नहीं नहीं जो है कि वी आर In fact, see, what happens is many times they don't analyze. ये हम करेंगे तो इसका क्या impact होगा? What will be the outcome of this? उनके लिए एक sensational news हाँ, बन जाती है एंड ये. दे आर एक्चुअली प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ दोज हु वांट टू बिल्ड अप दिस नैरेटिव। Correct, correct. They actually play into the hands of these people. Particularly अब देखिए अभी जो अमास और इसराइल का प्रॉब्लम चल रहा है, इसमें भी there is a Chinese hand and element in it, because both the US and India have been making a lot of efforts to build relationships in West Asia, and also to ensure that there is peace that prevails and there is a mutual economic benefit. Abhi G20 summit mein we announced a India West Asia Europe corridor, economic corridor thing, and the US has been doing a lot of effort for Abraham uh, अकॉर्ड्स। accords among these nations with Israel. They have been enemies for since the Israel was created in 1945, and since then they have been fighting between among themselves. Sometimes all of them together against Israel, sometimes individually between Israel and individual West Asia Muslim nations. So that has been going on. So there has been an effort to create peace there. So that if that happens, then Iran and which is already aligning so much with China, they don't have a value there. They are no more relevant in the entire West Asia, dynamics and calculus. So because of which China is also weakened diplomatically. So they wanted to create a problem. So China angle definitely has me, and they are trying to create mischief everywhere where they see a US and India gaining some kind of a stronghold or something like that. So there is this element. That there's one more thing I wanted to tell you. This nexus between the radical Islamist groups and Khalistan. If the Western nations, particularly US, Canada, UK, Australia, and all, do not control it, it will become an albatross around their necks themselves very soon. What has happened with that 1985 Kanishka bombing, Air India bombing, which because where
the majority of the 329 passengers were Canadians. That sort of terror attacks will increase in nations like US, Canada, Australia, and UK, and it will become a big problem, headache, and a terror threat for all these nations. It is going to happen if they don't control it, if they don't act against it. And let me tell you, I gave you two examples. One, a US-based Hudson Institute report, and the other is Bloomberg Review report. And the third one, I'm giving you Canada report. These are all reports from within their own countries. Terry Milowski, who is a very veteran journalist of more than 40 years, he has worked in several television channels. He has focused on Khalistan movement and throughout his most part of his career since the 1985 Kanishka bombing. He had brought out a report in 2020 for McDonald Laurier Institute, which is a Canada-based think tank. It is called as Khalistan, a project of Pakistan. These three reports, if those nations read up and heed the advice that these three reports have given, their countries will be in a better position and their relationship with India will be in a much better position, and they will not fall a victim to this radical Islam Khalistani movement nexus. That is my final statement. थैंक यू बिपिंद्र जी। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हम जो थिंक टैंक बिपिंद्र जी चलाते हैं उस पे उसकी वेबसाइट की जानकारी भी रहेगी। उस पर बहुत सारी जो है वो आपको अच्छी जानकारी मिलेगी और रिपोर्ट्स मिलेंगी। और अगर आप की कोई क्वेरीज हैं या आप और ज्यादा जानकारी किसी विषय में चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। हम विपिंद्र जी से वो क्वेश्चन शेयर करेंगे। उनकी वेबसाइट के माध्यम से भी आप उनसे संपर्क कर सकते हो, वहां पर आपको बहुत विस्तार में जानकारी मिलेगी। और आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो आप इसे आगे बढ़ाएं, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्दी हम एक नए विषय पर मिलेंगे और चर्चा करेंगे। और विपिंद्र जी, आपने अपना इतना मूल्यवान समय निकाला और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अरुणानंद जी, इट्स अ प्लेजर बीइंग ऑन योर इवेंट। अच्छा लगता है मुझे। जी धन्यवाद। सो थैंक यू।